this time? Yes, ma'am. Good. Others, did you all see the video? No, that's not nice. Anyways, let's continue with connection oriented and connection less services. In today's session, we will do this connection oriented and connection less services. See, these are the basically two major types of services. One is connection oriented service, and the other is connection less service. Can you all hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, when I say connection oriented service, that means this type of service requires a connection, because what is the English word? Connection oriented. That means that if you want to use this service, you have to first establish a connection. So connection oriented service ka example that they've given is a telephone system. Now when we have to call up anyone, what do? We pick up the phone, we dial the number, we talk, and then we disconnect. So in order to talk, what am I doing? I have to first establish the connection with that person. Or is it so that when I just pick up the receiver, I'm without even establishing the connection? Is it so? Excuse me, I'm asking you all. हेलो No, ma'am. तुम लोग सो रहे हो क्या? No, ma'am. मैम एक्चुअली समझा हाँ? नहीं. And it is always these few common girls who reply, the others never reply. See, I will repeat this. There are two major types of services. Okay. One is connection oriented service and the other is connection less service. The first type, we are going to see the first type, which is connection oriented service. Now, when I say connection oriented, that means this kind of service requires a connection to be established first. A very simple example of connection oriented service would be a telephone system. Now, when you use a telephone, what do? You pick up the phone, you dial the number, then you wait for the receiver to answer, matlab pick your call, and then you all start talking, right? Am I right or wrong? Yes, ma'am. Yes. Yes. Yeah. Is it so that if I want to, let's say, talk to someone, through my telepathy, a message will be sent to her and we both will start talking, no matter how far we are? Is it like that? No, ma'am. This No. might No, ma'am. this might happen in romantic movies and TV serials, but in reality, you need to have a technical connection, a wired connection between the two, or a wireless connection between the two, right? So, connection oriented service means if I have to use this service, the connection has to be established first. So, when I am using a telephone, I pick the phone up, I dial the number, then I wait. उसके बाद में can you कुछ सुनाई देता है आवाज टू 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 टू, this the connection is established between you and the receiver. Now the receiver should be free na to pick your call up. अगर उसका नंबर वो ऑलरेडी किसी से बात कर रही है तो बिजी आएगा, करेक्ट? अगर वो फ्री है will answer your call and then you can talk. This kind of service is known as connection oriented service. Okay, now in this the transmission of bits is in, like, suppose for example there is this tube, okay, and from the one end of the tube you are passing certain bits or maybe some data, so it will be received in the same order that you are passing, correct? It will be received in the same order that you are passing, या सबसे लास्ट जो भेज रहे हो वो सबसे पहले मिलेगा, ऐसा कुछ है? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. It's like it's like a tube, and it's a horizontal tube. You are transmitting data.
and the way you are transmitting the bits, in the same order it will be received. So when we are talking over the phone, the way I am talking, it will be received in that order only. Correct? Yes, Yes, ma'am. ma'am. This connection oriented service. Okay. Now in contrast, there is something called as connection less service. Now connection less service का example they have given is a postal service, postal system. Now postal system में क्या होता है? There is a letter, you write the address, you write the content of the letter, the destination address, and you post it. Correct? वो stamp वगैरह लग के you post it. Now connection-less service में using this postal service, primitively it used to be post office ही बहुत letters यहाँ वहाँ भेजने के लिए post office ही जाना पड़ता था, post से ही जाता था letters. So in this kind of service, only is there any connection established? Suppose if I want to send a letter to let's say my friend who resides in Delhi, okay? So if suppose I want to send a letter to her, then I will write my letter, I will write the destination address, and I will just मतलब मैं पोस्ट ऑफिस जाके उसको दे दूंगी, और जो स्टैम्प वैम्प है जो भी है पैसा वो करके आई कम बैक. Am I establishing any connection with my friend? No. No, ma'am. I'm establishing any connection with my friend. This is known as connectionless service. Now, in this case, suppose if I am sending 2-3 letters साथ में, okay, or maybe let's say for example, आज मैंने एक letter भेजा, after 3 days एक और letter भेजा, after 5 days एक और letter भेजा, ठीक है? So ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो लेटर मैंने सबसे पहले भेजा है वही सबसे पहले पहुंचेगा. That's not necessary because it is a connectionless service. So, the letters are being transmitted here and there independently, and they हो सकता है कि जो last में तुमने भेजा है वो सबसे पहले पहुंचा. Okay? This is connectionless service. Understood? Yes, ma'am. Understood or what? Yeah. So Yes, ma'am. the first letter could be delayed due to some reason. The second letter पहले पहुंच जाएगा, है ना? Due to some reason. Okay, this is known as connection-less service. Now, each service is characterized by quality of service. Some services are reliable in the sense that they never lose data. Now, what do you mean by reliable? Reliable means data is never lost. In which case will the data, see, reliable means I am sending a piece of information to the receiver. I want to be sure that the receiver has received it. So what will the receiver do? The receiver will send me an acknowledgement that, hello, I have received your message. So I will understand that, okay, that person has received this message. Now, this is known as reliable delivery. Reliable, जहाँ पे भी आएगा ना, वहाँ पे acknowledgement होता है. So when there is an acknowledgement, there is an overhead. Why overhead? Because time ज़्यादा लगेगा. See, one communication to take place. Now, for example, if I am looking out for reliable connection, so what is the requirement here? That the receiver send me an acknowledgement. मेरा communication तब तक complete नहीं होगा जब तक मुझे acknowledgement नहीं मिल जाता. ठीक है? अभी at time interval T1, I am sending the message to the receiver. The receiver receives the message in time interval T5. Okay? And उसके बाद में the receiver is sending the acknowledgement back to the sender. Again, it is taking 5 seconds. So at time interval T10, I received the acknowledgement. So one communication to get over, it took 10 seconds. So whenever there is reliability or whenever there is acknowledgement, it introduces overheads or it introduces delays. Okay? Understood? Understood or what? Ma'am, can you repeat it, please? I think you guys are not paying attention. It's very simple. Very easy. Reliable means, see, first connection oriented, connectionless, that you have understood, right? मैम लास्ट का पार्ट ही नहीं समझा. Yes, ma'am. पहले का समझ गया. So see, quality, each service is characterized by its quality. Now, quality creeps into when you have a reliable service. Now, when I say that anything is reliable, that means I need an acknowledgement. I
need an assurance that the receiver has received the complete message that I have sent. Okay? Yes, ma'am. This is known as reliability. Now, when the receiver acknowledges, see, in reliable communication, the one piece of communication, one direction of communication will be called as complete till you receive the acknowledgement. If you are not receiving the acknowledgement, the communication will not be held as complete communication. Okay? Okay, ma'am. Okay. So now here what happens is, if I am the sender, okay, and I am sending some information to the receiver. So at time interval T1, I sent the information. At time interval T5, the receiver receives it. And then the receiver sends back an acknowledgement that I have received your so-and-so information. Okay. Another 5 seconds. So time interval T10, the communication will be assumed to be complete. Okay, to be complete. Why? Because I have received the acknowledgement. So reliability means acknowledgement. Remember Yes, this. ma'am. Yes, ma'am. Unreliable means there is no need of acknowledgement. भेज दिया, भेज दिया. Understood? Yes, ma'am. हाँ, अभी Yes, ma'am. Yeah, abhi filal we are seeing reliable connection. Okay. Now a typical situation in which reliable connection oriented service is appropriate is file transfer. Now when you are transferring files, you want to be like, for example, just consider a business situation, okay, where a very sensitive file has to be transferred. So the sender has to be assured that the file has received by the receiver in proper order or not, in proper way or not. Now, in this case, you will require a connection-oriented, reliable service. Okay, a reliable service. I am sending you this information. Okay, just see it. Have you received it? The receiver will turant say, send an acknowledgement that yes, I have received it. Okay, so this is what connection-oriented, reliable connection-oriented service. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Just give me a minute. It's too hot. Yeah. So now reliable connection oriented services again has two variations. The variations are message sequences and byte streams. See, if you have a book, just start writing that two main types of services that you learned is connection oriented and connectionless. Oriented के अंदर क्या है? Reliable. Reliable connection oriented service को वापस से divide किया है दो variations में, जिसको बोलते हैं message sequences and byte streams. ठीक है? Now what happens in message sequence and what happens in byte streams we will see. In message sequences, the message boundaries are preserved. What do you mean by boundaries? Can anyone tell me? Limitations. लेकिन मैसेज बाउंड्री क्या होएगा? लिमिटेशन ओके, बट मैसेज बाउंड्री क्या होएगा? मैम वो मैसेज का लिमिट होता है, उतने ही मतलब वी कैन टाइप. No, it's not that. Message boundary preserved means, suppose if I am sending you 5 messages. Hi there, I am Neetu. How are you doing? Good morning. Welcome to our college. Okay. Now these are 5 sentences. So hi there, full stop. So that hi there पे खत्म हुआ ना, तो that's one message boundary. ठीक है. How are you उधर से चालू हुआ, मतलब वहां पे एक बाउंड्री पे खत्म हो गया, यानी how से स्टार्ट हुआ next message. So how are you पे खत्म हुआ, so that's another boundary. So message sequences मतलब the boundaries are preserved, यानी कि अगर when I am sending you 5 messages, it should not it should, how it should be received as, it should be received as 5 messages only. कि यहाँ फर्स्ट मैसेज यहाँ चालू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, सेकंड मैसेज यहाँ चालू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, थर्ड मैसेज यहाँ खत्म हुआ. समझा? तो मैम वी कैन नॉट चेंज द लेंथ और मैसेजेस का जितना जो कुछ भी है.
See, कि अगर स्टार्ट में 5 किया है तो उसके बाद भी 5 ही करना है, ऐसा कुछ। नहीं ऐसा, ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, कितने भी मैसेजेस हैं तुम्हारे भेजने के, हाउ मच एवर मैसेजेस यू वांट टू सेंड, I am talking about transmission. I am not talking about the size of the message. ओके मैम, ओके मैम। I'm not saying that there is a restriction on the size of the message. No. कितना भी size रहने दो. What I'm saying is number of messages. Now, when you are sending so many messages, it's going to be transmitted in the form of bits only, na? 101010. यस मैम। Correct. Now, when you're sending this, it should be received the way you have sent. Correct? यस मैम, यस मैम। Yes. In message boundaries, I'm saying. In message boundaries. Okay. Now, in this case, the sender will obviously want that if I am sending a message, hi there, how are you, good morning, it should be received as this only. So in such cases, when it should be received at this like the way it was sent, you have to preserve the boundaries of the message. मतलब last में क्या मैसेज के वो तुमको सेव करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा या मार्क करना पड़ेगा. यस मैम। रिसीवर को ये पता चलेगा कि सेकेंड मैसेज यहां से स्टार्ट हुआ है. ओके मैम, हाँ मैम, समझा समझा। समझा? ओके मैम, समझा? यस समझा। That is known as message boundaries. So, for example, see the example that I have written is when 21024 byte messages are sent, they arrive as two distinct 1024 byte messages, never as one 2048 byte message. मतलब 1024 plus 1024 करोगे तो कितना आता है? 2048 आता है. Yes or no? Yes, yes, ma'am. यस मैम। Plus Yes, ma'am. 1024 2048. 2048. अभी अगर मैं दो मैसेजेस भेज रही हूँ, 1024 बाइट का एक मैसेज है, दूसरा मैसेज भी 1024 बाइट्स का है. इट शुड बी रिसीव्ड एज टू सेपरेट मैसेजेस ओनली ऑफ जितना भी उसका लेंथ था. ठीक है? इट शुड नॉट बी रिसीव्ड एज वन मैसेज ऑफ 204 बाइट्स कंबाइंड. समझ में आ रहा है? Excuse me, ma'am. हाँ बोलो. There are messages in the chat box. Can you go and see? Okay, so I'll go with the first. If you want me to repeat the connectionless service, No, ma'am. The indicating one, indicating the starting point. which one? Acha. Yes. The start and the end point of any single message is its boundaries. Correct. मतलब स्टार्ट नहीं भी किया, अगर एंड पॉइंट को भी लोकेट कर दिया तो भी इनफ है ना. तो पता चल जाएगा कि उसका नेक्स्ट वर्ड इज, उसका जो भी नेक्स्ट वर्ड रहेगा वो नेक्स्ट मैसेज का स्टार्ट है. यस और नो? यस मैम। If I write hello there, how are you, I am fine, thank you. So hello, if I am just marking after there, ठीक है, hello there, there के बाद मैंने मार्क कर लिया. How are you, you के बाद मैंने मार्क कर लिया. I am fine, fine के बाद मैंने मार्क किया. And what about you, वापस you के बाद मैंने मार्क किया. तो पता चल जाएगा ना कि नेक्स्ट मैसेज कहाँ से शुरू हो रहा है. Yes, ma'am. Correct? यस। Please visualize. So when I'm in message boundaries, what happens is if I'm sending two messages of 1024 byte each, यानी एक मैसेज का साइज क्या है? 1024 बाइट. तुम यहाँ पे वो साइज वाइज मत देखो, वो तुम लोगों सिर्फ इसीलिए बताया कि बाउंड्री कहाँ लोकेट करना है. अगर मैं दो मैसेजेस भेज रही हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 बाइट्स का मैसेजेस भेज रही हूँ, तो वो 10 बाइट्स के ही मैसेजेस, दो ही मैसेजेस मिलने चाहिए इन मैसेज बाउंड्रीज, ना कि एक
मैसेज मिले उसको 20 बाइट्स का, समझा अभी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, yes, ma'am. अंडरस्टूड? श्योर? Yes, ma'am. Yes, श्योर ना? yes, ma'am. हाँ, नाउ इन लेटर मीन्स बाइट स्ट्रीम्स में क्या होता है? द कनेक्शन इज सिंपली अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स विथ नो मैसेज बाउंड्रीज. Okay, so in byte stream, there is no message boundaries preserved. It is just transmitted as stream of bytes. Okay, it is just transmitted as stream of bytes. So when 2048 bytes arrive at receiver's place, the receiver will not be able to say that whether it is a 1 2048 byte message, 2 1024 byte messages, और 2048 1 बाइट मैसेजेस. समझा ये? Ma'am, can you please repeat? See, in you all understood message sequences, correct? Yes, ma'am. Now the second variation is byte streams. Now in byte streams is exactly opposite to message sequences. In message sequences, the boundaries are preserved, okay, so that the receiver knows the start and end of every message. Is that understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी जो सेकेंड टाइप है बाइट स्ट्रीम्स, वो उसका टोटली ऑपोजिट है. बाइट स्ट्रीम में क्या होता है? देयर आर नो मैसेज बाउंड्रीज प्रिजर्व. ठीक है? इट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ बाइट्स, अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स. सो सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिसीवर के पास में लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 20 बाइट्स जाता है. 20 बाइट्स रिसीवर को मिल गए. ठीक है? इतना समझा? Yes, ma'am. Yes. हाँ. अभी रिसीवर को जब ये 20 बाइट्स मिलेंगे तब वो रिसीवर को पता नहीं चलेगा कि ये एक मैसेज है 20 बाइट्स का, कि 2 मैसेजेस है 10 बाइट्स के, या 20 मैसेजेस है एक बाइट का. Yes, ma'am. Yes, समझा. ma'am. समझा? समझा Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. वो भी 20 की जगह पे उन लोग ने 2048 बाइट्स दिया है, वो बस रिप्लेस कर दो. Yes, Yes, ma'am. ma'am. This is known as byte stream. This is known as byte stream. So in byte stream, there are no message boundaries. Suppose for example, अगर मैं एक document share कर रही हूँ, तो it's just a series of bytes which is transmitting. There's no need of marking the start and end. But if I'm chatting with someone, then in that case it cannot be transmitted. Suppose just imagine that in WhatsApp, if I am messaging समथिंग टू CR और मेरा मैसेज अगर बड़ा है और मैंने कुछ फुल स्टॉप नहीं डाला, कोई कॉमा नहीं डाला, कुछ फुल स्टॉप नहीं डाला, तो उसको समझ में आएगा कि कहाँ से एंड हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैसेज कौन सा है, कहाँ तक पढ़ना है. No, ma'am. No. When you are chatting ना, that time message boundaries have to be preserved. और अगर सपोज व्हाट्सएप पे इवन इफ आई एम चैटिंग और मैं बराबर से मैसेज टाइप कर रही हूँ, हाय हेलो यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, ये बाकी है वो बाकी है, लेकिन सपोज CR को रिसीव होएगा एक पूरा ऐसा बड़ा सा मैसेज जिसमें उसको बिल्कुल कहीं पता नहीं चलेगा कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है. विल शी बी एबल टू अंडरस्टैंड? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. In such cases, message boundaries. Sorry. Right, ma'am. मतलब मैसेज पूरा ऊपर नीचे हो गया जो आपने एक साथ भेजा था, इसकी वजह से सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट मैसेज कौन सा है, सेकंड मैसेज कौन सा है. मैसेज ऊपर नीचे हो सकता है, दैट विल बी ट्रांसमिशन एरर. लेकिन अगर मैसेज का सीक्वेंस भी वो लोग मेंटेन करते हैं तो भी अगर बाउंड्रीज लोकेट नहीं की तो एक पता कैसे चलेगा कि एक मैसेज कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है. तो अगर मैं ऐसे बोलूंगी कि हेलो यू आर सपोज टू डू दिस, आई विल बी डूइंग दिस, यू हैव नॉट डन इट, तो करना क्या है और नहीं करना है वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगी, कहाँ खत्म हो रहा है और कहाँ स्टार्ट हो रहा है नया मैसेज. Yes, ma'am. Like स्पेस नहीं दिया है, नहीं तो पैराग्राफ नहीं दिया है तो कंफ्यूजन होगा, राइट? स्पेस नहीं, पैराग्राफ नहीं, फुल स्टॉप नहीं, मेन तो फुल स्टॉप हाँ, सो कंफ्यूजन हो जाएगा. कि समझा क्या. मैम. हाँ. So in a way full stop is a boundary, message boundary.
Okay, ma'am. समझा? इससे क्या Yes. होता है कि हाँ एक मैसेज इतना, सेकेंड मैसेज यहाँ नेक्स्ट से शुरू हो रहा है, थर्ड मैसेज इधर शुरू। तो व्हेन यू आर चैटिंग यू हैव टू प्रिजर्व द मैसेज बाउंड्रीज, करेक्ट? मतलब ट्रांसमिशन के वक्त में मैसेज बाउंड्रीज प्रिजर्व होनी चाहिए। जस्ट इमेजिन इनकी व्हाट्सएप पे अगर आप चैटिंग कर रहे हो एंड देयर आर नो मैसेज बाउंड्रीज, हाउ विल यू अंडरस्टैंड द सेंडर्स मैसेज? You will not understand. Correct? Whereas in some cases, you need not preserve the message boundary. Suppose if I am transmitting 1000 pages document, it will get transmitted at bytes of streams. ना उसका सिर्फ start और end चाहिए, हाँ चालू कहाँ से हो रहा है डॉक्यूमेंट और लास्ट पेज नंबर का लास्ट वर्ड, दैट्स इट। बीच के फुल स्टॉप्स चाहिए क्या सारे? नॉट रिक्वायर्ड। समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंडरस्टूड ना? Yes, ma'am. Okay. Now, for some application, the transit delays introduced by acknowledgements are unacceptable. One such application is digitized voice traffic. Now, suppose if, for example, if the two of us are talking, okay, and connection oriented service है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि मुझे तेरी सारी बातें सुनाई दे रही है, उसके बाद रिसीवर बात करेगा। इससे क्या हो रहा है? टाइम लग रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इफ यू ऑल रिमेम्बर, बहुत पहले whenever we used to make when we were very small, when we used to make international calls, that time it used to be if I am talking then उसके 2 सेकंड बाद में मैसेज उनको मिलता था, फिर वो रिप्लाई करते थे, उसके बाद 2 सेकंड बाद में मुझे मिलता था। तो we used to wait ट्रांसमिशन के बाद। Have you Yes, ma'am. experienced this kind of a call? Yes. Yes. So, in such cases, this is very irritating. We don't like to wait. ठीक है, थोड़ा बहुत लाइन में डिस्टरबेंस रहेगा, कर कर आवाज आ रहा है, वो चलेगा। लेकिन ये जो वेटिंग है, उसके वजह से जो डिले होता है, वो अच्छा नहीं लगता है। करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So when we are using telephone, the telephone users, it's okay if there is a bit of noise or there is some disturbance on the line, that is fine. We are ready, we are okay with it. But if every time that we are talking and every time we have to wait for 2 seconds to 5 seconds, then I better end up the call. I don't want to talk. Because that is, मतलब वो delay है ना, that human nature, we don't like that. Yes. So in Yes, ma'am. cases, acknowledgements are unacceptable. जैसे कि the example they've given is digitized voice traffic. मतलब when you're talking over the phone. Is that understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now imagine one more situation. This particular acknowledgement is not acceptable. Is video conferencing. Now suppose for example I'm talking. Now मैं बात कर रही हूँ. मैंने एक sentence बोला. I will have to wait. Okay, till it is received. Then you all will say something. After some time, I will receive. If this is not a continuous flow, जैसे मैं बात कर रही हूँ, it looks like I am talking real time. जैसे हम लोग पर्सनली जैसे बात करते थे, वैसे ही बात करने का अभी फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. Yes, ma'am. थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस, थोड़े बहुत टेक्निकल ग्लिचेस चलते हैं। few pixels here and there, वीडियो ठीक से नहीं आ रहा, डिस्टॉर्ट आ रहा है here and there, it's okay. But imagine if you have 1 hour of conference and in that 1 hour of conference, if you want to wait for 2 hours of acknowledgement, how irritating that would be. Is that acceptable? Yes. No, ma'am. No, ma'am. No, right? So in such cases, we need not we don't need acknowledgement. ठीक है? Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, cool. Now the next is unreliable connection-less service. Means there is no acknowledgement, often called datagram service. Example, telegram service, electronic junk mail. Okay. Now connectionless, we all know what is connectionless. What is connectionless? There is no need of establishing any connection. You simply write the destination address and you send. है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, That is ma'am. connectionless service.
रिलायबल मतलब एक्नॉलेजमेंट चाहिए, अनरिलायबल मतलब एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए. ओके? यस मैम. Yes, ma'am. ऐसे सर्विस को मतलब कैसे सर्विस को, अनरिलायबल कनेक्शन लेस सर्विस को वी ऑल्सो कॉल्ड एज डेटाग्राम सर्विस. ओके? Yes, ma'am. अभी ये मूवीज वगैरह में नहीं बताते टेलीग्राम आया, टेलीग्राम आया, टेलीग्राम आया, देखा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टेलीग्राम में क्या होता है, देर इज नो एक्नॉलेजमेंट. लेटर आ गया, वो भी पता नहीं कभी आता है, और ना तो सेंडर को कभी पता पड़ता है कि उसको मिला है कि नहीं मिला. ठीक है? दैट इज दैट काइंड ऑफ सर्विस इज नोन एज टेलीग्राम सर्विस. इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल क्या होता है? तुम लोग अपने अपने इनबॉक्सेस में देखते होंगे ना, बहुत सारे जंक आते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, सभी ये जंक मेल्स का ना क्या रहता है कि जो भी भेज रहा है, अगर वो दैट पर्सन वांट्स टू स्प्रेड सम काइंड ऑफ वायरस इनटू द सिस्टम्स, तो वो जंक मेल के थ्रू भेजेगा. अभी या तो फिर उसको सपोज कुछ अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करना है और उसको कहीं से डेटाबेस मिला है ईमेल आईडीज का, तो ही विल जस्ट शूट his advertisements to all the email IDs that he has without expecting any acknowledgement in return. Correct? वो क्या सोचेगा कि अगर मेरे पास में 1000 का डेटाबेस है और अगर 100 लोगों को भी वो बराबर से मिल गया, 100 भी वैलिड ईमेल आईडीज हो गए, 100 में से अगर 2-3 लोगों ने भी खोल के देख लिया, तो मेरा तो एडवर्टाइजमेंट हो गया 2-3 लोगों में. ठीक है? दैट इज दिस काइंड ऑफ सर्विस इज नोन एज डेटाग्राम सर्विस, अनरिलायबल कनेक्शन लेस सर्विस. दैट्स एन एग्जाम्पल. आई गिव यू एन एग्जाम्पल जंक मेल का और टेलीग्राम. अंडरस्टूड? Where not established. In this case, connection is not established. Neither acknowledgements are received. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, see, there is one more case. In other situations, the convenience of not having to establish a connection. इसका क्या मतलब है? कौन सा सर्विस हुआ? नॉट नो कनेक्शन मतलब Connectionless. Connectionless service. connectionless. To send one short message is desired, but reliability is essential. मतलब कहीं कहीं कुछ कुछ केसेस में कैसा रहता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश मत करो, लेकिन मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए. ऐसी सर्विस को क्या बोलेंगे? एक्नॉलेज्ड डेटाग्राम सर्विस. समझा? Yes, ma'am. कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करना है, कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करना है, लेकिन मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए कि मैसेज मिला है या नहीं मिला. जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग ये टेक जोन के लिए जब जाते हो कॉलेजेस में, ब्रोशर और ये सब लेकर, तब हम लोग तुमको एक्नॉलेजमेंट स्लिप साइन करके लाने को बोलते हैं. Yes, ma'am. तो हम कनेक्शन एस्टैब्लिश तो करते नहीं है पहले, है ना? बट व्हाट वी नीड इज रिलायबिलिटी. वी वांट टू बी श्योर दैट यू हैव actually visited the college and spoken to the concerned person, so bring the signature. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. As acknowledged datagram service. समझा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ये किधर गया? Okay. Still another service is request reply. Now request reply service में क्या होता है? Let's see. In this service, the sender transmits a single message or datagram containing a request. The reply contains the answer. Now, this is basically request reply is used in client server model. What happens in client server? The client raises or fires a query to the server, and then the server replies. This is known as request reply service. In request reply क्या होता है? Someone asks, okay, and the person replies. This is request reply service. Understood? Yes, ma'am. Abhi suppose for example, you are asking a query to the local library, asking where Vigor is spoken. ये language, this is spoken in remote China, if I'm not wrong.
Very good is spoken falls into this category. Matlab, they have given an example of request reply, but very good example of request reply is the client server model. In client server model, what happens? Client request भेजता है और server reply करता है. This type of service is known as request reply service, and majorly this service is used in client server architecture. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Yes, Here you have connection. इसके बाद में there is service primitives. Yes.